Hi दोस्तों, in this series of dynamic programming, today I'm going to clear your one doubt जो सबके दिमाग में होगा अभी कि ये सीरीज ही क्यों देखे डायनामिक प्रोग्रामिंग की कहीं और से क्यों नहीं। सबसे पहली चीज तो ये बोल देता हूं कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उनका मैं जवाब हमेशा रेडी रखूंगा। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन डाउन सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। द वेरी फर्स्ट थिंग इज आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू। अच्छा, लेट्स फेस दिस थिंग, यू नो कि अपनी लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आया है वेयर वी वर स्ट्रगलिंग विद वन पर्टिकुलर टॉपिक जस्ट अ नाइट बिफोर एग्जाम। सो इट्स नॉट लाइक कि अपन ने पढ़ाई नहीं की। We attended the lecture, we attended the classes, we read the book, we read articles, we watched some videos also. But still the topic was so complex that we're like, what a bullshit यार, ये क्या है? And फिर क्या होता है, अपन अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, we tell him, यार भाई पढ़ा दे यार, कल एग्जाम है. And the moment he starts speaking or he starts explaining within a span of 5 to 10 minutes, तुम्हें वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है. So have you wondered why is that? Well, because your friend is also a student like you. So while he was studying, he knew that what are the points or what are the things that he was finding confusing. So when he's explaining you the same thing, he was taking some analogies and he knows that some things are tough or where you can make mistake. So he will try to emphasize on those points. So similarly, even I am a student and I know where to emphasize, as I have also given the many interviews, I have given exams. So I know where you guys can make mistake as I have also made mistakes. So वहां पे अच्छे से तुम्हारा कस के मैं कान पकड़ के बताऊंगा कि देखो दोस्तों यहाँ गलती कर सकते हो. And I know that there are some terms which are very confusing. So I'll make sure that वो जो confusion है ना वो तुम्हारे साथ नहीं रहे. ठीक है? Okay, the next thing is I have experience in interview. Okay, so ये चीज मान लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आज नहीं तो कल इंटरव्यू देना ही होगा. ठीक है? So they might be preparing for placement or something like that. So I have experience in interview too. So I have given interviews. Even I myself got selected in one of a big MNC, Citrix. So I know what questions they ask. अच्छा, बात सिर्फ क्वेश्चन की नहीं होती है, बात अप्रोच की भी होती है. इट्स नॉट लाइक दे विल आस्क द क्वेश्चन एंड दे जस्ट वांट यू टू गिव एन आंसर. सो दे वांट टू सी हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर. सो सपोज यू स्टार्ट ऑल द वे फ्रॉम रिकर्शन. सो दिस इज द बेस सॉल्यूशन, but it takes a lot of time. So we can store the values, we can remove the redundant calculation, and we can make a memoized version of that solution. But sir, it still takes a lot of memory because whenever we call a recursive function, so the value is stored and we want to go ahead with top down approach or a bottom up approach or an iterative manner. So कहने का तात्पर्य ये है कि they want to see what, like तुम्हें कितनी knowledge है. They don't want to see कि ये question है और ये answer है. They want to see that if you know like what are the problems we face when we are solving a question. Okay? The next thing is everything related to DP under one umbrella. अच्छा, ये बात बता देता हूं कि अगर तुम डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में चीजों को ढूंढने पड़ोगे ना तो इंटरनेट पे है, बट एवरीथिंग इज इन लाइक बिट्स एंड पीसेस. So you have to struggle a lot. You have to go to different websites, then you need to go to watch some other videos, read some books and all those things. But what I have done, I have taken all the things under one umbrella. So while I was learning dynamic programming, I was making notes. So whatever website I was learning from, whatever the book, whatever the article, and whatever the conclusion that I drawn from my own notes, so वो सब आपको एक जगह पे मिलेगा. यूं बोलूं तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा सटक आपको इसी सीरीज के अंदर पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा. चाहे आपके कॉलेज के एग्जाम्स हो, चाहे आपके इंटरव्यू प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, यू विल गेट एवरीथिंग हियर. द नेक्स्ट थिंग इज माय माइंडसेट. अच्छा, वो रेड लाइन इसलिए है क्योंकि पहले का रह गया. चलो कोई नहीं. तो मेरा माइंडसेट क्या है? सो देखो, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूं ताकि मेरे जो जूनियर्स है उनको वो प्रॉब्लम नहीं आए. बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग डायनामिक प्रोग्रामिंग आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट. आई हैव टू have to ask my seniors how to do it, or I have to read some articles, have to watch videos. Like I struggled a lot for that and I don't want my juniors to do that. So I'll make sure
I have just one single mindset that I'll try my best to deliver the best content to you guys. ठीक है? अच्छा, चलो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर करता है. एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी तुमको देता हूं कि क्यूरियोसिटी जो रहती है ना अपन दिमाग, एक बार अपने दिमाग में ये रहती है कि कोई भी टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले होते हैं कि क्यों पढ़ें इस टॉपिक को, डायनामिक प्रोग्रामिंग को क्यों पढ़े. सो और व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो देयर आर लाइक हेल लॉट एप्लीकेशन. तो कुछ अगर तुम मुझसे पूछो तो मैंने तुम्हारे लिए नोट डाउन करके रखी है. सो इफ यू गाइस वॉच क्रिकेट देन जो स्कोर प्रोटेक्टर वाली चीज होती है ना, या दैट आल्सो यूजेस डायनामिक प्रोग्रामिंग. अच्छा चलो क्रिकेट यूज नहीं करते, गूगल मैप तो करते हो. So in order to go from source to destination to find out the shortest path, there also we uses dynamic programming. अच्छा चलो ठीक है, गूगल मैप भी यूज नहीं करते, बट कम से कम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो नेट तो यूज कर रहे हो ना. So what is going on is like, you know, your device, whatever, mobile or laptop, it's sending some signals to the server and it wants some particular data. So you know, जो तुम्हारा डेटा तुम्हारे डिवाइस से सर्वर के पास जाना है तो उसके अंदर भी अलग अलग रास्ते हैं. So in order to find out the shortest path, there also we are using dynamic programming. There are lots of application, but सबसे important चीज बोलूँ ना तुम्हें मोटिवेट करेगी वो है must do for placement. Yes दोस्तों, तुम किसी भी कंपनी के अंदर चले जाओ, एक ना एक क्वेश्चन पक्के से आएगा तुम्हारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का, चाहे वो फर्स्ट राउंड में हो चाहे इंटरव्यू में हो, वो तुमसे डेफिनेटली पूछेंगे. चलो अब इस वीडियो को तो यहीं पे खत्म करते हैं. अच्छा होगा तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा होगा कि इस सीरीज को आगे देखने का. सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन सी द अपकमिंग वीडियोस ऑन दिस डायनामिक प्रोग्रामिंग. बाकी मिलते हैं आगे. जय हिंद दोस्तों.